आज मैं आपको बहुत बेहतरीन वीडियो बताने वाला हूँ कि एक बहन डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करती है और कहती है कि क्या मैं सिख से शादी कर सकती हूँ। वो एक अल्लाह पे यकीन रखता है और बुत परस्ती नहीं करता। तो आइए दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। The next question is from a girl who's a student from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I have been approached by my friend who belongs to a Sikh community for marriage. I have some questions regarding interfaith marriage in Islam. Verse Surah number 2, verse number 221 states, and do not marry polytheist women until they believe. And a believing slave woman is better than a polytheist, even though she might please you. And do not marry polytheist men to your woman until they believe. And a believing slave is better than a polytheist, even though he might please you. Those invites you to the fire, they invite you to the fire, and Allah invites you to paradise and to forgiveness by His permission. And He makes His verse clear to the people that perhaps they may remember. This verse doesn't say directly not to marry non-Muslims. It says don't marry polytheists and idol worshippers. In which category does Sikh community comes in? Furthermore, the boy said that in their community they also believe in one God and are monotheist. Is marrying from this community for Muslims allowed? If this is allowed, why the majority of Muslim communities are against it? The sister from Karachi, Pakistan has asked a question that she has a proposal from one of her friends who's a Sikh, and because that Sikh doesn't do idol worship, he believes in one God, so nowhere does the Quran say that do not marry non-Muslim. It only says do not marry idol worshippers, based on the verse of the Quran, Surah Baqarah chapter 2 verse number 221, which I also repeated earlier, and even she has given the translation. Nowhere does the Quran say that you should not marry non-Muslim. So is it permissible, or logically she thinks it's permitted that a Muslim can marry a Sikh? Sister, there is a misunderstanding from your side. The verse you quoted clearly mentions in Surah Baqarah chapter 2 verse number 221, do not marry idolaters. It says mushrik until they believe. Whether it's an idolater or whether it's any person, any human being, do not marry them until they believe. That means it says you cannot marry unbelievers. It says indirectly you cannot marry non-Muslims. And the verse continues. A believing man, that is a Muslim man, even if he is a slave man, is better than a idolater, a mushrik, even if he allows you. That means a believing man, even if he is a slave man, is better than a non-believing man, is better than a non-Muslim. So whether the word mushrik is used, but it says the mushrik should become a mu'min. That means you cannot marry any non-Muslim. It clearly states that a Muslim man, even if he is a slave man, is better than an idolater or a non-Muslim. So for you to say nowhere does the Quran say that you cannot marry non-Muslim is a misunderstanding. The Quran clearly states that you should marry only a believing man. So all non-believing men you cannot marry. The Sikh, they may believe in monotheism, part of it. But monotheism is not sufficient. We should believe in Tawheed. Only believe in one God is not sufficient. In Islam, we have to believe in Tawheed. And Tawheed, monotheism is one small aspect of Tawheed. And if you hear my lecture on concept of God in major world religion, I have spoken in detail about Tawheed. Tawheed al-Rububiyyah, Tawheed al-Asma wa-Sifat, and Tawheed al-Ibadah. If you break Tawheed al-Ibadah, that is shirk. But even Tawheed al-Asma wa-Sifat and Tawheed al-Rububiyyah, if you break, even that is shirk. So what if you realize that the Quran is very clear cut that you cannot marry non-Muslim until they believe. So whether it be Sikh, whether it be Christian, whether it be Hindu, any non-Muslim, only if the person believes in one Allah subhanahu wa ta'ala and believes that the last and final messenger is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you cannot marry that person. And the next verse goes on further to say that you cannot marry your woman to the non-Muslim men. It's very clear cut.
So this verse definitely includes all non-Muslim. You cannot marry any non-Muslim until they believe, whether they are idolaters, whether they are Christian, whether they are Hindus, whether they are Sikh. If they are non-Muslim, a girl cannot marry a non-Muslim until that boy believes. So if the boy who has proposed you, if he believes in Islam and he agrees there's one Allah subhanahu wa ta'ala, and he agrees that the last and final messenger is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and if he accepts Islam, then you can marry him, otherwise you cannot. Hope that answers the question. दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी। आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी सुना है, तो दोस्तों बहुत बेहतरीन जवाब था। ऐसे तो बहुत से लोग हैं दोस्तों जो कि अल्लाह पे यकीन रखते हैं लेकिन और बुत परस्ती भी नहीं करते हैं, लेकिन वो अब उसने कुछ लोगों ने जो है वो ईमान नहीं लाए होते हैं। जिस तरह के दोस्तों इस बहन का सवाल था कि मैं एक सिख है उससे शादी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, वो जो है बुत परस्ती भी नहीं करता है और वो एक अल्लाह पे यकीन रखता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अल्लाह पे यकीन रखते हैं और बुत परस्ती नहीं करते हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात है अल्लाह पर ईमान लाना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, ये सबसे पहला जो है वह शर्त है इस्लाम में। जब तक कोई भी शख्स जो है वो ईमान नहीं लाता, अगर वो अल्लाह पे यकीन रखता हो, अगर वो बुत परस्ती भी नहीं करता हो और किसी चीज़ की जो वो इबादत भी नहीं करता हो, लेकिन जब तक वो ईमान ना लाए, वो एक खुदा पर यकीन ना रखता हो, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन ना रखता हो, तो ऐसे उससे जो है वो शादी नहीं कर सकते आप। जैसे कि दोस्तों इस बहन ने कहा कि एक गुलाम मुसलमान जो है वो बेहतर है एक मुशरिक शख्स से। तो यहाँ पे दोस्तों बात ही ख़त्म हो गई है। इस बहन ने खुद भी जो है वो एक जवाब सा दिया है कि एक गुलाम मुसलमान जो है वो बेहतर है एक मुशरिक बंदे से। अब मुशरिक जो है दोस्तों ऐसे बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं वो एक खुदा पे यकीन रखते हैं और बुत परस्ती भी नहीं करते, लेकिन उनके ईमान का पता नहीं चलता कि उनका जो ईमान है वो क्या है, वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किस मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। ऐसे बहुत से लोगों के जहन में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आजकल जो मेरे ख्याल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ यही करते हैं या पैसों के लिए या किसी और चीज़ के लिए कि अगर एक बंदा जो है वो सिख है, अगर वो अमीर है, अगर वो किसी और ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखता है लेकिन वो पैसे वाला हो, फिर यही लोग कहते हैं एक छोटी सी जो उसकी जो वजूहात वो उस पर जो है वो कायम अपना जो कदम है वो उस पर डट के रख देते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ हाँ अल्लाह ताला की जो है वो अल्लाह पे यकीन रखता है, बुत परस्ती नहीं करता। लेकिन सबसे जो पहले बात है दोस्तों वो आप लोगों ने यही नोट करनी है कि क्या ये बंदा जो है अल्लाह पे यकीन रखता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखता है, क्या इसने तौहीद पर ईमान लाया है कि नहीं। अगर उसने ईमान नहीं लाया, अगर वो सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखता है, अगर वो बुत परस्ती नहीं करता, तो ये बात कोई भी मानी नहीं रखती है। मानी ये बात रखती है जब तक उसने इस्लाम कबूल ना किया हो, जब तक उसने तौहीद पर ईमान ना लाया, जब तक उस बात पर यकीन हो कि क्या अल्लाह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल नबी है, जब तक इन तमाम बातों पर वो 100% ईमान ना लाए तो तब तक इससे शादी नहीं कर सकते आप, जितने भी मुशरिक हो जाए। दोस्तों अगर इस बहन का जो सवाल देखे वो जो सिख है वो अल्लाह पे यकीन भी रखता है, वो बुत परस्ती भी नहीं करता, बल्कि ये कुछ भी मानी नहीं रखती। आप सबसे पहले जो मानी इस्लाम में हमारे पर रखती है वो यही रखती है कि आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो बंदे से भी अगर आप शादी करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मुसलमान होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ईमान लाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो है इस बात पे यकीन रखेगा कि अल्लाह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल व बंदे हैं। तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों, अगर मुसलमान कम्युनिटी के अगर लोग हैं तो वो छोटी छोटी बातों को जो है नज़रअंदाज कर लेते हैं। जो सबसे लेकिन नज़रअंदाज करने की बात नहीं है दोस्तों, हमारे कुरान मजीद में है कि आप कभी भी मुशरिकीन लोगों से शादी नहीं कर सकते हो, तो नहीं कर सकते दोस्तों। किसी भी नान मज़हब से या किसी भी नान बंदे मुशरिकीन बंदों से या किसी भी ऐसे बंदों से जैसे जो कि सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखता है और बुत परस्ती नहीं करता, बल्कि इन लोगों पे कोई भी यकीन नहीं रखना चाहिए दोस्तों। यही लोग हैं दोस्तों, अगर यही अल्लाह पे यकीन रखता है, अगर ये जो है बुत परस्ती नहीं करता है, तो फिर ये ईमान क्यों नहीं लाता। जैसे कि आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक की बातें सुनी है दोस्तों, बहुत बेहतरीन जवाब दिया है डॉक्टर जाकिर नाइक ने। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं दोस्तों जिनके पास इल्म होते हुए भी लेकिन वो उनको नज़रअंदाज करते हैं और फिर छोटी सी बात को पकड़ लेते हैं कि ये तो अल्लाह पे यकीन रखता है, ये कैसे अल्लाह पे यकीन रखता है, क्या इसने ईमान लाया है। सबसे पहले जो फर्स्ट काम जो करना है किसी मुसलमान ने, अगर उसको मुसलमान बनना है तो उसको पहले सर में ईमान लाना होगा, इस्लाम में उसको दाखिल करना होगा।
ये कलमा पढ़ना होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तब ये पढ़ लेगा तो वो मुशरिक से हट जाएगा, वो मुसलमान कम्युनिटी में आ जाएगा, वो उसने इस्लाम कबूल कर लिया, वो एक मुसलमान बन गया, तब उससे आप शादी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक सिख है वो अल्लाह पे यकीन रखता है और वो जो है बुत परस्ती नहीं करता है। ये चीज़ें कि कभी भी कोई भी मानी नहीं रखती है। जितने भी बहन भाई है, जितने भी फैमिली से मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि सिर्फ यही बात नहीं है कि अगर आप किसी बंदे में कोई ऐसे पॉइंट आप देखें कि वो सिर्फ जो है वो कहते हैं कि हम अल्लाह पे सिर्फ यकीन रखते हैं और जो है बुत परस्ती नहीं करते, बल्कि इन बातों को बिल्कुल हमें नजर ना, बल्कि इस बात पे हमें यकीन रखना चाहिए कि वो बंदा जो है अल्लाह पे यकीन रखे और ईमान लाए इस कलमे पर कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तब वो एक इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाएगा, फिर वो मुसलमान बन जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक की ये वीडियो देखी है, तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी ऐसे कमेंट अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वस्सलाम।